नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और 10th क्लास के सभी दर्शक इस वक्त हमें देख सकते हैं पीएम eVidya चैनल नंबर 10 पर। हम बातचीत करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 पर। नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1 हम पहले भी कर चुके हैं और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है ncertofficial ऑफिशियल, क्योंकि दोनों वीडियोस साथ में जुड़े हुए हैं, दोनों क्लासेस जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहें तो पार्ट 1 प्लीज देखिएगा और अगर आपके पास कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहे, कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आए, वो आप हमारे चैनल के लाइव चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, वो आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर रुकेंगे। और आप अगर चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने सवाल dth.class10@ciet.nic.in पर। आपके सवालों का हम हमेशा इंतजार करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं श्री पवन कुमार गुप्ता जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू एंड वेलकम टू माय डियर लर्नर्स। वेलकम टू यू टू सर। सर है पीजीटी इन हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली से। तो आइए सर से पूछते हैं कि सर, what exactly did you explain to our viewers, to our students in the first part? Could you please sum it up in a few sentences, and then we'll begin with the second part. Okay, thank you ma'am, thank you again. So dear learners, as madam has already told that we have completed the first part of the first chapter of history of class 10th social science, the rise of nationalism in Europe. And dear learners, today we are going to discuss its second part. So before this, Sir, your voice has been muted. Can you just switch your audio on? Yes. Okay, right. Can you repeat, because we couldn't hear? So, welcoming you all, my dear learners. Today we are going to discuss the second part of the first chapter of class 10th social science history, the rise of nationalism in Europe. So we have already taken its first part, and today we are going to discuss the further topics of this chapter. So dear learners, before moving to our topics, let us remind at some precautionary measures against the COVID-19 measures, and here are some do's and don'ts before you. And we all should follow these do's and don'ts very strictly, because we are all are seeing that nowadays this corona pandemic is going on very severely. And by adopting these measures, not only we can be safe, but we can also keep safe our families too. So now let us move forward. So students, in previous topic I told you that in the book, right, there are few concepts we have to learn. Number first, it has been given what is the meaning of nationalism. Next one, causes. And here we will again describe you before you the causes of this. And next one is the results of nationalism. And today we will also try to discuss some of the results of this nationalism. And last one is conclusion. So let us remind first what we discussed in our previous session. So very first, causes, right? So under causes, there were several causes for the spreading of nationalism in Europe. So very first cause, very first we discussed about the meaning of nationalism, nation state, then we discussed it, and after it we discussed the causes, under causes, the impact of French Revolution. What was the French Revolution and how French Revolution affected the feeling of nationalism. Next one was the reforms of Napoleon. How the reforms of Napoleon enhanced this feeling in Europe. Next one was the impact of Vienna Congress. Now, next one was the conservative feelings and how the conservative feelings spread it.
And the last one we discussed in previous session was the revolutionaries and the liberals. So what was the impact of revolutionaries and liberals over it? Yes, it was for today's. We discussed in previous topics, madam. Okay. And so, what are the points that we are going to cover in this part two? Okay. So, students, we are going to discuss some of the other topics, or we can say we can include it to the reasons or causes of spreading of nationalism. The next call is romantic imagination and national feelings. So, actually, what was this? So, there were so many people in Europe who considered that not only political activities, not only science, not only reasons, but the art and culture too can spread the feeling of nationalism among the people. And students sometimes question has been asked under it that how the uh, culture spread nationalism in Europe. So we can write its answer under the different points. Number one, we can write its meaning and definition, or in other words, we can say explanation. Then we can write some examples. We can give some examples that how some people and some organizations spread the cultural heritage and their through their languages, through their uh, thoughts, they spread the feelings. So in this way, very first we will talk about the German philosopher, and that German philosopher was John Gottfried Herder. So according to John Gottfried Herder, he always believed that the true German culture was discovered or remains among the common people. And these common people were known as Das Volk. So common people, we always see, हम अपने चारों तरफ देखें, so there are so many folk stories, there are so many folk dances, right? There are so many, we can say, group items which are being practiced by the people all around us. तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि किस तरीके से लोग इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, so those are the real things related to the nationalism, and all these things connect the people. लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, और इसी जुड़ाव के कारण लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है, and that is the feeling of nationalism. So dear learners, we can write this example. The next example is related to the Poland. So in previous session we discussed about the Vienna Congress. So there was one very important decision of Vienna Congress, and what was that? That was under the Vienna decisions, the domination of Poland was given to Russia. जो पोलैंड था, पोलैंड को एक तरीके से रशिया को दे दिया गया, और रशिया ने पोलैंड के ऊपर अपना रूल करना स्टार्ट किया. तो क्या हुआ, जो पोलैंड के लोग थे, दे डिड नॉट लाइक द डोमिनेशन ऑफ रशिया, एंड दे स्टार्टेड टू अपोज इट. धीरे धीरे उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया. एंड हाउ द पीपल ऑफ पोलैंड अपोज्ड इट? दे अपोज्ड इट through the culture, they opposed it through the language, Polish language, they opposed it through their dances. तो इस तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा और अपनी भाषा और विचारों के द्वारा उन्होंने इस तरीके से नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की फीलिंग को फैलाना स्टार्ट किया. एंड हियर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वेरी फेमस artist. He was Karol Kopinski. So though Karol Kopinski, he developed two major dance forms. उन्होंने दो बहुत ही फेमस डांस फॉर्म्स को वहां पर डेवलप किया, पोलोनेस एंड माजोर्का. तो जो पोलोनेस और माजोर्का डांस फॉर्म्स थे, इन डांस फॉर्म्स के थ्रू he represented the feeling of nationalism.
he represented the oppose against the Russia. और जब ये डांस फॉर्म को वहां पर इस तरीके से एनेक्ट किया जाता था, उसको डिस्प्ले किया जाता था, उसको परफॉर्म किया जाता था, तो उनमें से बहुत सारी चीजें वो यानी कि पॉलिश नेशनलिज्म से रिलेटेड होती। एज वी कैन सी इन इंडिया, अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जब देयर वाज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, सो व्हाट वी सी, देयर वर सो मेनी राइटर्स। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया कि उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने नॉवेल्स के थ्रू, उन्होंने अपनी स्टोरीज के थ्रू लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया, लोगों के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग को डेवलप किया। द सेम थिंग वाज डन बाय द कैरोल पोलंस्की थ्रू दीज डांस फॉर्म्स, एंड not only through these dance forms, but what we see that the Polish people, they also means started to adopt their own language. They opposed the Russian language. उन्होंने वहां पर जो रशियन लैंग्वेज को जबरदस्ती इम्पोज किया जा रहा था पोलिश लोगों के ऊपर, उसको अपोज किया। तो इसके साथ ही वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, लेखक थे और दूसरे कलाकार थे, उनको जबरन जेल में डाल दिया, उनको जबरन अरेस्ट करके और टॉर्चर किया गया, सो दैट दीज फीलिंग्स कुड नॉट बी स्प्रेड देयर। बट व्हाट वी सी दैट इन स्पाइट ऑफ दीज टॉर्चर्स, द पीपल ऑफ पोलैंड, दे enhanced and they promoted such type of feelings. Now students, you can write another example, and this example is related to Grimm brothers, right? And if you have read this book or you have read this chapter, so you have learned about the Grimm brothers. So these were two brothers, Wilhelm Grimm and Jacob Grimm. So their contribution, just like the John Gottfried, they also believed that the German culture exists in the common people. So what they did, उन्होंने क्या किया कि उनका भी इस तरीके से मानना था कि जो लोगों की अपनी जो परंपराएं हैं, अपने जो विश्वास हैं, उन्हीं में नेशनलिज्म की फीलिंग जन्म लेती है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों की जो लोक कहानियां थी उनको कलेक्ट किया, एंड दे रीच्ड विलेज टू विलेज एंड दे लिसन्ड टू द पीपल, दे कलेक्टेड स्टोरीज, दे रोट इट डाउन, एंड अल्टीमेटली दे पब्लिश्ड, एंड दे पब्लिश्ड दीज स्टोरीज अंडर द ग्रिम्स फेरी टेल्स। तो उन्होंने ग्रिम्स फेरी टेल्स को, उनकी सारी स्टोरीज को कलेक्ट करके उनको पब्लिश कराया, जिससे कि लोग उनको पढ़ें और पढ़ने के बाद में उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग है। इसी तरीके से ग्रिम ब्रदर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो जर्मन वर्ड्स थे, उन जर्मन वर्ड्स को इकट्ठा करके, उनको कलेक्ट करके, एंड दे आल्सो पब्लिश्ड जर्मन डिक्शनरीज इन 33 वॉल्यूम्स। 33 वॉल्यूम्स में उन्होंने जर्मन डिक्शनरी को भी पब्लिश किया। So this is another example we can write under it. Sir, हमारे एक व्यूअर हैं आदित्य, वो आपसे जो आपने फ्रेंच सिविल कोड 1804 आपने बताया, वो एक बार वो बोल रहे हैं कि दोबारा बता दीजिए ब्रीफ में। Okay, so actually this was the Napoleonic Code, right? So under this Napoleonic Code, so many rules and regulations were framed by Napoleon. जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को बनाया। That's why it is named as Napoleonic Code. Code means कानून, हिंदी में इसको बोलते हैं संहिता, ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बने, उनमें से कुछ जो मेजर रूल्स थे, जस्ट लाइक ही एबोलिश द स्लेवरी सिस्टम, ही गिव पीपल राइट टू प्रॉपर्टी, उसने लोगों को प्रॉपर्टी के राइट्स दिए, एंड ही आल्सो ट्राइड टू एस्टैब्लिश द इक्वलिटी अमंग द पीपल। ही एबोलिश्ड
the means privileges based on the birth. So in this way, so many things were done, and all these things are collectively known as Napoleonic Code. Yes, ma'am. ओके सर, एक क्वेश्चन और है। वो नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड नहीं है, बट हमारी एक व्यूअर है और वो बहुत क्यूरियस है, वो जानना चाहती है। वो एनटीएससी के लिए तैयारी कर रही है और वो जानना चाहती है कि सोशल साइंस का सिलेबस वो किस तरह से तैयार कर सके एनटीएससी के स्टेज 1 की तैयारी के लिए। तो क्या आप उनकी कुछ टिप्स देकर कुछ मदद कर सकते हैं? वो 10th क्लास की ही स्टूडेंट है। जी, तो इसके लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है, वी शुड रीड द बुक्स, एंड पर्टिकुलरली वी टेक द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी, सो दीज आर वेरी फ्रूटफुल एंड बेसिक बुक्स। तो इस तरीके से नंबर 1 हम बुक्स को पढ़ें, और पढ़ने के बाद में जितने भी उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वी शुड नोट इट डाउन on our copies, so just like the notes. In the same way, so many students they feel some problems in recalling the dates and years. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे जो इन डेट्स हैं, ईयर्स हैं, उनको एक जगह पर लिखें, एंड वी शुड रिवाइज देम रेगुलरली so that we can learn those dates easily. In the same way, you should also take some competitive magazine. Any competitive magazine you can take, and you should read that magazine regularly. In the same way, you should also consult any one of the newspaper, and you should also be connected to the news channels and watch news daily. And dear learners, there is one more thing I want to say, that you should also watch any international channel, so that we can also be acquainted with what is happening around us in the world. So in this way we can do that. Absolutely. Thank you so much, sir. And this wasn't the question by just one person. There were many students who are preparing for this exam, and they are expecting a lot of answers from everybody. So Yes. thank you so much for this. And moving on to what we were talking about, can you discuss the role of culture in spreading the nationalist feelings in Europe? Yes, ma'am. So we have just discussed all the things, that how the culture, language, and the traditions of the people help to spread the feeling of nationalism. And students, now we will discuss about the results of the nationalism. So under the results, in this book you will see the first result is related to the Greek War of Independence. The next results of this nationalist feelings are related to unification of Germany, unification of Italy, and unification of Britain. And at last, the ultimate result of this nationalism was given in this chapter is the extreme nationalism. And this extreme nationalism was displayed under the Balkan problem. So we will discuss it later. So let us start to discuss the first result, that is the Greek War of Independence. So this Greek War of Independence is also very important in this chapter, and many times it has been asked as a 3-mark question. So students, here you can see the Greece, right? And at the right side you can see Turkey, right? So in Turkey, the Muslim rulers who were ruling, so their empire and their rule was known as Ottoman Empire. And you can see the Black Sea, right? So means the countries all around the Black Sea are known as Balkan countries or Balkan region, right? So almost all this Balkan region was under the Ottoman Empire. ये जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके डोमिनेशन में था। तो क्या हुआ, जब यूरोप में, यानी कि जो ग्रीस है, ग्रीस के लेफ्ट साइड में अगर हम मैप की तरफ देखेंगे, वेस्टर्न साइड में देखेंगे, तो यूरोप में जब इस तरीके से नेशनलिस्ट फीलिंग्स फैली, तो क्या हुआ, द पीपल ऑफ ग्रीस वर आल्सो मोटिवेटेड,
और उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम रूल था उनके ऊपर, ऑटोमन एम्पायर का रूल था, उसको उन्होंने अपोज करना स्टार्ट किया। और इसके लिए हम देखते हैं कि सो मैनी यूरोपियंस दे हेल्प द ग्रीक पीपल। और उन्होंने ग्रीक पीपल को हेल्प क्यों किया? क्योंकि जो यूरोप की कल्चर है, वहाँ की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, वहाँ का रिलीजन है, दैट इज वेरी मच इंस्पायर्ड with the culture and religion and languages of Greece. So emotionally and culturally, people of Europe were associated with the people of Greece. तो उन्होंने मदद करी। And here you can see one of the example, and that example is related to Lord Byron, and he was a very famous English poet. तो वो he himself went to Greece to fight on behalf of the Greek people. उनकी तरफ से वो खुद लड़ने के लिए गए और उनके लिए लड़े। लेकिन वहां पे क्या हुआ कि इस तरीके से फीवर आने की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो लर्नर्स, दिस इज ओनली वन एग्जांपल। थ्रू दिस एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द पीपल ऑफ यूरोप असिस्टेड द पीपल ऑफ ग्रीस, नॉट ओनली थ्रू द मनी, बट दे हिमसेल्फ वेंट टू द so many people went to the Greece. और इसके बाद क्या हुआ, जब ग्रीस में नेशनलिस्ट फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई और मुस्लिम रूलर्स ने देखा नाउ दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर ग्रीस, सो अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू मेक ग्रीस इंडिपेंडेंट। और इस तरीके से क्या हुआ कि टर्की, या जो ऑटोमन एम्पायर था और ग्रीस जो था, उसके बीच में एक ट्रीटी हुई, एंड दिस ट्रीटी इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। Learners, Constantinople was a city in Turkey, and this treaty was done in 1832. और इस ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ कि जो ग्रीस था, that Greece got its independence. So this was all about the independence war of Greece. Greek War of Independence. Okay, so we have got last 3 minutes left, and we have got two questions from our viewers. Nandini is asking, what is secret society? Okay, right. So these secret societies, as we see in India, अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली। जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था तो हम देखें बहुत सारे जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस थे, ठीक है, जैसे कि भगत सिंह जो रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई अपनी, ठीक है। इन द सेम वे हम देखें कि यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज में देयर वाज द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज, सो पीपल ऑफ दोज कंट्रीज वांटेड टू थ्रो आउट द फॉरेन रूलर्स, so many secret societies were formed in Europe, and these secret societies were known as Carbonari, इनको Carbonari बोलते थे, and two very famous secret societies were formed by Giuseppe Mazzini, and those were Young Italy and Young Europe. So we all these things we have discussed, dear learners, and you can watch, as Madam told you, you can go through the first part of this session. Okay, so she's also asking about Ottoman Empire. So has this already been discussed as well? Yes, we have discussed, but I am telling her Ottoman Empire एक तरीके से मुस्लिम रूल, right? And the center or the we can say जो उसका केंद्र या जहां से ऑटोमन एम्पायर के रूलर्स या मुस्लिम रूलर्स रूल करते थे, that was in Turkey. So students, अगर हम देखें तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था, it was a very big empire, right? तो आप देखें, अभी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे बाल्कन प्रॉब्लम, तब भी इसके बारे में आएगा। तो जो ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं, जो रीजन्स हैं, वहां पर पूरा that there was the control of Ottoman Empire. In the same way, some parts of North Africa, some parts of Western Asia, तो इस तरीके से बहुत बड़े पार्ट में इन मुस्लिम रूलर्स का कंट्रोल था, that was known as Ottoman Empire. Okay, so thank you so much sir, एक बार फिर से एक्सप्लेन करने के लिए। और नंदिनी, I hope आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, and still if you want to know more details about your question, sir has already answered it in the first part of the nationalism in Europe. So please
go to our YouTube channel and ncertofficial and watch the first part as well, and then second part, so that will make more sense and you'll understand it better. Thank you so much, sir, for being here for this explanation, and some topics are still left, so maybe we'll take it in the third part. Yes, you can take it further. So Yes. thank you, dear learners, and take care about yourself and about your family. Yes, sir. Thank you. You too. Have a good day and stay safe, please. To all the viewers, to all the students, please stay safe. Keep on watching these programs, and we are coming back next with another program. और वो होगा साइंस का एक क्लास जिसमें हम बातचीत करेंगे ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस पर। और 9th क्लास के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर NCERT ऑफिशियल। Till then, take care. Thank you. Namaste.